74th रिपब्लिक डेच्या निमित्ताने सर्वांना शुभेच्छा. एनसीसी कॅडेट आपल्या समोर, आपण सर्वांनी त्याचा आनंद घ्यावा. 1 महिन्याच्या अथक परिश्रमानंतर हे फॉर्मेशन त्यांनी बसवलेलं आहे. शुभेच्छा. आपलं एनसीसी परेड या ठिकाणी आपल्या कॅडेट्सनी 1 महिनाभर अथक परिश्रम करून झेंड्याच्या डाव्या बाजूला आपल्यासाठी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. करून पाठीमागे जे उभे राहिलेले त्यांनी सर्वांनी सादर करत आहे. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण आपल्या जागेवरती उठून उभे राहायचंय. जय श्रीमान. डायरेक्टर डॉक्टर पठारे सर, त्यांच्या सोबत आहेत व्हाईस प्रिन्सिपल रजाक सर, व्हाईस प्रिन्सिपल
जय श्रीमान, इसके दिन परेड पर 80 कैडेट आपके निकले हाजिर। जय श्रीमान, अल्फा कंपनी खड़ा रे, बाकी ब्रेक विश्राम। जय श्रीमान, ब्रेक सावधान। जय श्रीमान, ब्रेक को मार्केट करने की अनुमति देता हूं। जय श्रीमान, दिमाग चलेगा। गुड मॉर्निंग। आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर आर 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अहमदनगर कॉलेज उत्तर महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी के छात्र एकता और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अहमदनगर कॉलेज के ये 80 कैडेट 3 दस्तों में कदम कदम बढ़ाए जा इस धुन पर शानदार संचलन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साहिल लिमसे ये TYBA का छात्र है। आप सभी तालियां बजा सकते हैं अगर आपको ये संचलन पसंद है। दस्ता 1 का नेतृत्व कर रहा है। ये FI BCS का स्टूडेंट है। टुकड़ी 2 का नेतृत्व कर रही है जूनियर अंडर ऑफिसर तनुजा नलगे। FY की तीसरे दस्ते का नेतृत्व कर रहा है जूनियर अंडर ऑफिसर सौरभ धवले, जो TYBCS का स्टूडेंट है। देश के युवाओं में निस्वार्थ सेवा भाव का निर्माण करना एनसीसी कड़ी मेहनत के बाद इन छात्रों ने ये संचलन का निर्माण किया है, जो आपके सामने संचलित मोटो है। वो भी आज की प्रापक है। युवाओं को प्रेरित करने की एक उद्देश्य ये एनसीसी के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। इसी को लेकर एनसीसी इंटर बटालियन राज्य और राष्ट्र स्तर पर
प्रशिक्षण कैंप तथा गतिविधियां होती है, जिसमें इस वर्ष अहमदनगर कॉलेज एनसीसी कैडेट्स का सफलतापूर्वक योगदान रहा है। मैं आज के गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर आर जे बाणवत सर, इनसे निवेदन करता हूं कि कैडेट्स को प्रमाण पत्र वितरित करें। कैप्टन अमन जगताप, ये कैडेट 2015 का है और वर्तमान में वो 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट में अफसर है। आज राजपथ पर पंजाब रेजिमेंट मार्चिंग दस्ते का वो नेतृत्व कर रहा है। हम कैप्टन अमन जगताप का सभी तालियों से अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद। कारपोरल अवधूत बेदरकर बेस्ट लीडरशिप कैंप अमरावती में सहभागी था और वहां से उसका एडवांस लीडरशिप कैंप के लिए चयन हुआ। आनंद गुजरात में अवधूत राष्ट्रीय स्तर पर अहमदनगर कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम तालियों से अवधूत बेदरकर का अभिनंदन करेंगे। सीनियर अंडर ऑफिसर ज्योति रुकवल 2021 की आरडीसी कैडेट, आपका गणतंत्र परेड 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व रहा। आपने गणतंत्र दिवस परेड 2021 में न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर अहमदनगर कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया था। धन्यवाद। सीनियर अंडर ऑफिसर साहिल लिमसे, आप टीवाई-बीएससी के छात्र हैं। MIRC अहमदनगर में हुए ATC राष्ट्रीय स्तर के कैंप में अहमदनगर कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया तथा राष्ट्रीय स्तर पर SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कैंप के आपने सफलतापूर्वक यश प्राप्त किया। साहिल लिमसे। CQMS एश ठुबे, CQMS एश ठुबे, आप FY-BSc के छात्र हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपका सहभाग रहा। BTR अहमदनगर में गार्ड के लिए आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। RDC 2023 के राज्य स्तर तक कॉलेज प्रतिनिधित्व किया तथा औरंगाबाद ग्रुप का आपने गार्ड का नेतृत्व किया। एश ठुबे, धन्यवाद। जूनियर अंडर ऑफिसर तनुजा नलगे, आप FY-BA की छात्र हैं। BTR अहमदनगर में गार्ड कमांडर रही और वहां पे आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। RDC 2023 में राज्य स्तर तक अहमदनगर कॉलेज का आपने प्रतिनिधित्व किया है। तनुजा नलगे। कैडेट सुजाता कुमारी, आप TY-BSc की गणित की छात्र हैं। RDC 2023 में राज्य स्तर तक कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया तथा औरंगाबाद ग्रुप की गार्ड कमांडर थी। आजादी का अमृत महोत्सव इस कंपटीशन में आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सुजाता कुमारी। जय श्रीमान। कैडेट ऋतुजा बेरड, आप TY-BA भूगोल शास्त्र की छात्र हैं। BTR अहमदनगर में हुए कैंप में एंकरिंग में आपको गोल्ड मेडल मिला तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्थल सेना कैंप में आपने अहमदनगर कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया। ऋतुजा बेरड। कैडेट अंकिता धवन, कैडेट अंकिता धवन, आप TY-BSc संख्या शास्त्र की छात्र है। BTR अहमदनगर में हुए कैंप में डांस कंपटीशन में आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ तथा थल सेना कैंप राष्ट्रीय कैंप के दौरान अहमदनगर कॉलेज का आपने राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। अंकिता धवन। जय श्रीमान। कैडेट राजेश्वरी भालेराव, कैडेट राजेश्वरी भालेराव, BTR कैंप में आपको डांस पर्टिकुलर लावनी में आपको गोल्ड मेडल मिला और आपने बेहतरीन वहां पे आपका प्रदर्शन रहा। राजेश्वरी भालेराव। जय
She is the best Lavani dancer. जूनियर अंडर ऑफिसर सौरभ ढवले TY BCA का छात्र है। जूनियर डिवीजन में जब था तब इन्होंने RDC दिल्ली कैंप अटेंड किया और MIRC आर्मी में अटैचमेंट कैंप में आपने बेस्ट ड्रिल में आपको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। सौरभ ढवले। जय श्रीमान। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। Good morning to all of you, and welcome to this, the 74th Republic Day of our nation. Before I share my thoughts with you this morning, I thought I'll take the opportunity to congratulate our cadets of our Ahmednagar College 17th Maharashtra Battalion for their beautiful march past. And I'd also like to congratulate our choir for the wonderful rendering of our national anthem. Not too long ago, when I was thinking about what thought or single thought I should share with you this morning, my mind wandered to the many inspirational people from the entire world whose lives we have all been inspired by. There are so many of them, to list a few: the great Mahatma Gandhi, the father of our nation; Saint Teresa of Calcutta, better known as the saint of the gutters; President Abraham Lincoln; the American civil rights leader Reverend Dr. Martin Luther King Jr., and a host of others in our country, in our world, in our state, and all over. We all read about them and hear about them, and their lives serve as a source of inspiration for you and me and for generations to come. We all need heroes and inspirational people in our lives so that we can look up to them and follow in their footsteps. As someone wisely said, and I quote, "A measure of a man's character is not what he gets from his ancestors, but what he leaves his descendants." In today's age, where competition and desire to succeed is so great, and where time seems to govern every action that we take, most of us seem to be caught up in some rat race or the other, busy competing with somebody or trying to play catch up with somebody, and in the process many a times forgetting to uphold some core human values that have helped generations of people in good stead as they navigate through life's journey. To drive home this simple point, or a single point, I thought I would share with you a certain story that I came across recently. It's a true story. It's a very compelling story, and it is based in South Africa. Not too long ago, if you remember, South Africa stood isolated from the world because of the apartheid policy that they followed, where there was a clear segregation between blacks and whites, and where blacks, as they were called in those days, were subject to the most unthinkable forms of oppression at the hands of the whites. The story which I am trying to tell you today is titled Forgiveness, and it's the most incredible true story which I have read in a long time. Set your scenes or set your minds to a courtroom trial that is going on in South Africa. Imagine a courtroom trial going on in South Africa where a frail, old 70-year-old black woman who can barely stand on her feet stands up on the arrival of the judge of the court. Facing the room in front of her are several white police officers, one of whom, Mr. Shaw, had just been tried and found implicated in the murder of both the woman's son and her husband some years ago. Mr. Shaw, the police officer, one fine day came to the woman's home, the old woman's home, took her son,
shot him at point blank range, set him alight on fire while he and his police officers partied nearby. Several years later, Mr. Shaw returns back to the same old lady's house and takes her husband as well. For many months, the old lady hears nothing about her husband. But after a few months, Mr. Shaw has the audacity to come back and take the old lady, drag her out. The old lady narrates that how she remembers that evening going to a place besides the river where she sees her husband bound and beaten, but still strong in spirit, lying on a pile of wood. And the last words that he heard from his lips as the officers poured gasoline on his body and set it aflame were, "Father, forgive them, O Lord, for they know not what they do." Fast forwarding the story, the woman now stands in the courtroom, fast forwarding it to the present, and listens to the confessions offered by the police officer, Mr. Shaw. And just before the court is going to announce their judgment, the Chief Justice of the highest court of the land in South Africa at that time, the Truth and the Reconciliation Commission, turns to the old lady and asks her, "So what do you want? How should justice be done to this man who so brutally destroyed your entire family?" The old lady, who could barely stand up, speaks very confidently and says, "I want three things." Very calmly she says, "I first want to be taken to the place where my husband's body was burnt so that I can gather up the dust and give his remains a decent burial. And number two, my husband and my son were my only family. And I want secondly, therefore, that Mr. Shaw become my son. I would like him to come twice a month to the ghetto. Ghetto is the word they use for slum. And spend a day or so with me so that I can shower whatever I love that I have still remaining in me. And finally, I want a third thing, which was also the wish of my dead husband. I would ask," she told the judge, "request you to have some police officers escorting me and lead me across the courtroom so that I can take Mr. Shaw in my arms and embrace him and let him know that he is truly forgiven." The story ends with the court assistants coming to lead the elderly woman across the room. Mr. Shaw, overwhelmed by what he had just heard, faints while the entire courtroom spontaneously stands and gives a standing ovation, most of them with tears in their eyes, to a lady who had the courage and the heart to forgive a man, an officer of the law, who had so mercilessly killed her husband and her son, the only family she had in the whole world. As someone so beautifully summed up, and I quote, "There is nobility in compassion, a beauty in empathy, and a grace in forgiveness." Let me repeat, there is nobility in compassion, beauty in empathy, and a grace in forgiveness. And therefore, on the auspices of this our 74th Republic Day, may God, in His infinite wisdom and mercy, grant you and me the strength and the conviction to learn to forgive those who have wronged us, and in the hope that it might serve as an example to the coming generation, and further in the hope that it will help our children and thereafter our children's children to lead better lives. God bless this great country and this great institution of ours. थँक्यू सर. आपल्या सर्वांचे आभार.